दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun। अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले। और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और मैं हूँ इस वक्त मीनल सिंघवी आपके साथ। शो है टेकसिटी का। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हम बातें करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आज हम इस शो में बातें करेंगे आईफोन सेटिंग्स। दोस्तों, जब हम कोई भी नई चीज लेते हैं, चाहे वो फोन हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि यार इसमें सेटिंग क्या होगी, हमें क्या करना होगा। जैसे हमने अगर विंडोज 7 से हम विंडोज 10 इंस्टॉल करवाते हैं तो हमें लगता है यार विंडोज 7 तो हमने काफी दिनों से यूज कर लिया, लेकिन 10 के लिए क्या बेसिक सेटिंग होगी, हमें क्या करना होगा। और आप जानते हो कि जैसे हम अपडेट करते हैं किसी भी चीज को, तो थोड़ी बहुत सेटिंग्स डिफरेंट होती है जो कि हमें करना ही पड़ता है। जैसे हमें टास्क मैनेजर देखना हो या नोटिफिकेशन की सेटिंग करनी हो, बहुत कुछ होता है, मामूली ही सही बट होता जरूर है। तो उन सेटिंग्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और छोटी छोटी बातें हम हर किसी से पूछे तो ये भी हमें अच्छा नहीं लगता। कभी कभी थोड़ा शाही सा फील होता है यार कि हम क्या पूछें, क्या सोचेंगे कि हमें इतना भी नहीं आता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी बातें मैंने अक्सर सुने हैं अपने लिसनर्स से। वो कहते हैं कि मिनल जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम बहुत न्यू यूजर हैं, तो थोड़ा पूछने में ऑकवर्ड लगता है, लेकिन फिर भी अब नहीं आता तो पूछना पड़ता है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक काम ये किया जा सकता है कि एक छोटा सा शो बनाया जाए जिसमें हम थोड़ी बेसिक सेटिंग की बातें करें। दो बहुत मामूली है, आजकल बहुत एडवांस लिसनर्स भी है हमारे पास जो काफी आईफोन यूजर है, एंड्रॉइड यूजर है, जो काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं हर चीज में, चाहे वो विंडोज हो या फिर आईफोन या स्मार्टफोन्स हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लिसनर्स हमारे ऐसे हैं जिन्हें आज भी काफी चीजों में, काफी जगह पर दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी अभी रिसेंटली मुझे एक लिसनर्स का कॉल आया था और वो चाहते हैं कि हम उन्हें कैब बुक करने के लिए कोई ट्यूटोरियल तैयार करके दें, क्योंकि कैजुअली ये होता है कि जो एडवांस यूजर है वो तो ऐप यूज करके उसको थोड़ा बहुत पढ़ के
एक बार इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कर कुरा के वो पता कर लेता है कि इस ऐप को कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि कुछ लोगों का ये पैशन होता है कि कोई नई ऐप अगर आई है तो उसको एक्सप्लोर करें, उसे कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या नई चीज है, अगर ये नई ऐप है तो इसमें कितना एक्सेसिबिलिटी इशू है या नहीं है, उसको एक्सप्लोर करने का एक पैशन होता है। मुझे भी है कुछ एक चीजों को लेकर, आपको भी होगा काफी कुछ चीजों को लेकर। चलिए, ये तो बातें हो गई, शुरुआत करते हैं आज के शो की और हम जानते हैं आईफोन के बेसिक सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, हमने पहले कुछ शोज में आईफोन के बेसिक फीचर्स बताए थे, कुछ जेस्चर्स बताए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईफोन को यूज करने के लिए हमें क्रिएट करनी होती है एप्पल आईडी, तो हमने आपको वो भी कैसे क्रिएट किया जाता है बताया एक ट्यूटोरियल में। अगर आपको कहीं भी कोई चीज मिसिंग लगती है तो आप यूट्यूब पर हमारा चैनल है रेडियो उड़ान के नाम से, उसमें आपको सारे शोज मिल जाएंगे। उसमें हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो एक प्लेलिस्ट है टेक्सिटी के नाम से, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे शोज वहां पर मिल जाएंगे। आईफोन के लिए जो हमने शोज बनाए थे उसमें हमने बताए थे जेस्चर्स के बारे में, एप्पल आईडी के बारे में और कुछ एप्स के बारे में। लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, जो बेसिकली काफी लिसनर्स के डाउट होते हैं जब वो नया आईफोन लेते हैं। और ये चीज ऐसी है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम कितना भी सीख लें कम है। तो चलिए चलते हैं आईफोन की सेटिंग की तरफ। सबसे पहले हम आईफोन को ओपन करते हैं और सेटिंग में जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स है। Settings. Search. Search field. Minal Singhvi. Apple ID. iCloud. iTunes and App Store. Button. Airplane mode. Off. Wi-Fi. ACT 1010000969671. Button. Bluetooth. On. Button. Mobile data. Button. Personal hotspot. Button. Carrier. Industrial airline. Button. Notifications. Button. Control center. Button. Do not disturb. Button. General. One update available. Display and brightness. Button. Wallpaper. Button. Sounds and haptics. Button. Siri and search. Button. Touch ID and passcode. Button. Emergency SOS. Button. Battery. Button. Privacy. Button. iTunes and App Store. Button. Accounts and passwords. Button. Mail. Button. Contacts. Button. Calendar. Button. Notes. Button. Reminders. Button. Phone. Button. Messages. Button. FaceTime. Button. Compass. Button. Safari. Button. Music. Button. Photos. Button. Camera. Button. Game Center. Button. AAJ tag. Button. गेम सेंटर के बाद हमारे फोन में जो भी एप्स इंस्टॉल है उसके बारे में इसके नीचे सारे एप्स आ जाएंगे और उसमें हम जो बेसिक सेटिंग होती है थोड़ी बहुत वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसको हम देखेंगे लास्ट में। पहले हम टॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी सेटिंग यूजफुल है, क्योंकि गेम सेंटर से पहले जितनी भी सेटिंग है वो सारी बहुत यूजफुल है, वो हमें आनी चाहिए। तो चलिए सबसे टॉप पे चलते हैं, वन बाय वन हम एक एक सेटिंग को ओपन करेंगे और उसको एक्सप्लोर करके देखेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि उसको हमें कैसे एडजस्ट करना है और क्या करना है। चलिए तो सबसे टॉप पे चलते हैं। टॉप पे जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहला ऑप्शन था सर्च का, तो सर्च में हम कोई भी सेटिंग को सर्च करके वहीं से डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं या फिर हम राइट स्वाइप करके भी एक एक सेटिंग पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम था सर्च का। सर्च के बाद जो सेकेंड ऑप्शन था वो था आईट्यून्स और iCloud आईडी। मैं आपको बता दूं कि iCloud एक सर्वर है जहां पर आप मैक्सिमम 5 GB तक डेटा सेव करके रख सकते हो। आईफोन में ये इनबिल्ड होता है। इसके बाद अगर आपको 5 GB से ज़्यादा अगर कोई डेटा रखना है तो उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना होगा, लेकिन 5 GB तक का डेटा आपको आईफोन में इनबिल्ट मिल जाता है। तो ये आपको सबसे टॉप में ही सेटिंग में सर्च के बाद जो ऑप्शन है उसमें मिल जाएगा। इसमें आपको आपकी iTunes आईडी मिलेगी जो ऐप स्टोर में आपने डाली है वो, और iCloud की सेटिंग भी यहाँ पर होगी। तो आप चाहो तो इसे मैनेज भी कर सकते हो। iCloud में आप अपने कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, अपने मेल्स, अपने ऐप्स, जो भी आपको लगता है ज़रूरी चीज़ें हैं, फोटोज़, म्यूज़िक, ये सब कुछ आप iCloud में सेव कर सकते हो और यहीं से ही आप इसकी सेटिंग को
चेंज भी कर सकते हो, यानी कि मैनेज भी कर सकते हो। चलिए हम एक बार इसको एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। Settings. Settings. Search. Search field. Minal Singhvi. Apple ID. iCloud. iTunes and App Store. Button. Selected. Settings. Back button. Apple ID. Heading. Account photo. Edit. Minal Singhvi. Minal Singhvi at gmail.com. Name. Phone numbers. Email. Button. Password and security. Button. Payment and shipping. Button. iCloud. Button. iTunes and App Store. Button. Set up family sharing. Button. Admin's iPhone. This iPhone 7. Button. Minal. Windows. Button. Sign out. Button. Sign out. Button. जी, तो ये कुछ सेटिंग थी यहाँ पर जो आपने सुनी। चलिए अब हम एक बार iCloud पे एंटर करके देखते हैं। Set up family sharing. iTunes and Apps. iCloud. Button. Payment and ship. iCloud. Button. Selected. Apple ID. Back button. iCloud. Heading. Storage. Heading. iCloud. 0 KB of 0 KB used. Dim. Manage storage. Button. Apps using iCloud. Heading. Photos. On. Button. Mail. On. Contacts. On. Calendars. On. Reminders. Off. Notes. On. तो हम यहाँ से iCloud की सेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। आपने सुना होगा, जो चीज़ आपको रिक्वायर लगती है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और जो चीज़ आपको नहीं लगती वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। iTunes iCloud ID के बाद सेटिंग में है एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से भी या कंट्रोल सेंटर से भी। कंट्रोल सेंटर के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि प्रीवियस शो में, पहले वाले शोज में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो कंट्रोल सेंटर से भी हम एयरप्लेन मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद Settings. Settings. Apple ID. Back button. Apple ID. Back button. Settings. Back button. Settings. Heading. Search. Search field. Minal Singhvi. Airplane mode. Off. Wi-Fi. Not connected. Button. वाईफाई नॉट कनेक्टेड। वाईफाई यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। Selected. Settings. Back button. Wi-Fi. Heading. Wi-Fi. Switch button. On. New Wi-Fi network connections have been turned off from control center. Choose a network. ACT 10100096967. ACT 1010 other. Wi-Fi. Switch button. On. Selected. ACT 101000. More info. Button. Choose a network. Other. Ask to join networks. Switch button. Off. No networks will be joined automatically. If no networks are available, you will have to manually select a network. No networks will be joined automatically. If no networks are available. ये वाईफाई की सेटिंग थी। यहाँ पर हमने देखा कि एक हमें वाईफाई ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, एक वाईफाई सेलेक्ट करने का ऑप्शन है और एक और ऑप्शन है इसके अंदर अदर का। और अदर में जो है वो है आस्क टू जॉइन नेटवर्क्स, यानी कि अगर आपके आसपास में कोई भी वाईफाई नेटवर्क होगा तो वो आपको पूछेगा कि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये वाला ऑप्शन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट मेरा टिप है कि इसको आप ऑफ ही रखिएगा क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करता है। बहुत जगह पे आजकल वाईफाई होते हैं और सारे के सारे वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, तो ये बार बार हमें डिस्टर्ब करते रहता है। वेल ये तो एक टिप था, इट्स अप टू यू। आप जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए वाईफाई के बाद जो ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ का। तो ब्लूटूथ तो हमें पता ही है, ब्लूटूथ को हम जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आता है और उसके बाद पेयरिंग करने का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ है आसपास में तो आप जब उसको ऑन करेंगे तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा और जब वो शो करेगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। Settings. Wi-Fi. Wi-Fi. Heading. Settings. Back. Settings. Back button. Settings. Heading. Airplane mode. Off. Wi-Fi. Bluetooth. Not connected. Button. Selected. Settings. Back button. Bluetooth. Heading. Bluetooth. On. Allow new connections. Button. New Bluetooth connections have been turned off from control center. My devices. Heading. SNS BT 001. Not connected. Button. Actions available. More info. Button. One of other devices. In progress. To pair an Apple Watch with your iPhone, go to the Watch app link. Full stop. To pair an Apple Watch with your iPhone, go to the Watch
ये कुछ ब्लूटूथ की सेटिंग थी जिसके बारे में हमने जाना। आपने देखा कि वहाँ पर ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन था और मेरा जो एक ब्लूटूथ कनेक्टेड ऑलरेडी है उसका भी नाम यहाँ पर बता रहा था, वो भी हम चाहें तो कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगली सेटिंग देखते हैं क्या है। मोबाइल डेटा का ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप मोबाइल का इंटरनेट यूज करते हैं तो उसके लिए है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। पर्सनल हॉटस्पॉट ये हम तब यूज करते हैं जब हम अपने मोबाइल का डेटा किसी पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं या फिर किसी और अदर मोबाइल पे कनेक्ट करते हैं। इसको भी हम एक बार एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। Personal hotspot. Heading. Personal hotspot. Off. Turn on personal hotspot to share your iPhone internet connection. Additional usage charges may apply. Other devices signed into your iCloud account will be able to use personal hotspot without having to turn it on manually. Wi-Fi password. To connect using Wi-Fi. 1. Choose admin's iPhone from the Wi-Fi settings on your computer or other device. 2. Enter the password when prompted. To connect using Bluetooth. 1. Pair iPhone with your computer. 2. On iPhone. Tap pair or enter the code displayed on your computer. 3. Connect to iPhone from computer. To connect using USB. 1. Plug iPhone into your computer. 2. Choose iPhone from the list of network services in your settings. 2. Choose iPhone from the list of network services in your settings. ये सेटिंग थी पर्सनल हॉटस्पॉट की। तो यहाँ से आपने सुना कि कैसे हम अपने सिस्टम को पेयर कर सकते हैं, कैसे हम अपना वाईफाई, फोन का वाईफाई ढूंढ के, यहाँ पर पासवर्ड भी होता है तो ये वाला पासवर्ड हमें लिखकर अपने फोन का हॉटस्पॉट लेकर किसी भी सिस्टम पे या फोन पे अपने फोन का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फोन का नाम भी चेंज कर सकते हैं और चाहो तो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर पासवर्ड बटन होता है आप उसको डबल टैप करेंगे तो वहाँ पर एडिट मोड पे आ जाएगा वो, तो उसके बाद आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली सेटिंग की तरफ जाते हैं। Settings. Personal hotspot. Heading. Settings. Back button. Personal hotspot. Off. Button. Carrier. Industrial airline. Button. जी, ये हमारे मोबाइल का कैरियर बता रहा है कि कौन सा कैरियर का मोबाइल हम यूज करते हैं। Notifications. Button. नोटिफिकेशन ये वो कॉलम है जहाँ पर हमें हमारे फोन में जितने भी एप्स हैं उन सब की नोटिफिकेशन की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहो तो जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर भी नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन आता है। अगर आप उस वक्त ऑन करना भूल गए तो आप यहाँ से उसे ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको नोटिफिकेशन ना आए तो वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। एक एक एप्लीकेशन इसमें होती है, मैनुअली डिफॉल्ट सब कुछ इसमें होता है, तो ये आप कर सकते हैं। एक बार हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। Notifications. Button. Selected. Settings. Back button. Notifications. Heading. Show previews. Always. Button. Notification previews will be shown whether iPhone is locked or unlocked. Notification style. Heading. AHA tab. Badges. Sounds. Manners. Button. ABP lib. Badges. Sounds. Manners. Button. तो यहाँ से मेरी सारी ऐप की नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। जो हमें नोटिफिकेशन आती है उसका जो प्रीव्यू होता है वो मैंने ऑलवेज कर रखा है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। NDTV. Now. Second ODI. India 232/4 and 46 overs. Dodd 68. Karthik 64 star. Beat New Zealand. 230/9 by 6 wickets to level series 1-1. जी, आपने देखा कि अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आई और उसका पूरा प्रीव्यू इसने यहाँ पर मुझे बताया। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ABP lib. Badges. AHA tab. Notification style. Notification previews will be shown whether iPhone is locked. Show previews. Selected. Notifications. Back button. Show previews. Heading. Selected. Always. When unlocked. Never. तो 3 ऑप्शन है इसमें, ऑलवेज, नेवर या व्हेन स्क्रीन लॉक। तो इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहते हो वैसे इसको शो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी प्रीव्यू ना बताए, सिर्फ ये बताए कि यहाँ से नोटिफिकेशन आई है, तो आप उसे नेवर भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली सेटिंग की तरफ।
Settings. Notifications. Button. Control center. Button. Selected. Settings. Back button. Control center. Heading. Swipe up from the bottom of the screen to view control center. Access within apps. On. Allow access to control center within apps. When disabled, you can still access control center from the home screen. Customize controls. Button. Customize controls. Button. Selected. Control center. Back button. Customize. Heading. Add and organize additional controls to appear in control center. Include. Heading. Torch. Reorder torch. Button. Timer. Action. Reorder timer. Calculator. Reorder calculator. Camera. Reorder camera. Button. More controls. Heading. Insert accessibility shortcuts. Button. 1 of 13. Accessibility shortcuts. Insert alarm. Button. 2 of 13. Alarm. Insert Apple TV remote. Button. 3 of 13. Insert do not disturb while driving. Button. 4. Do not disturb while driving. Insert guided access. Button. 5 of guided access. Insert low power mode. Button. Low power mode. Insert magnifier. Button. Magnifier. Insert notes. Button. Notes. Insert screen recording. Button. Screen recording. Insert stopwatch. Stopwatch. Insert text size. Button. Text size. Insert voice memos. Voice memo. Insert wallet. 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 तो ये कंट्रोल सेंटर है। मैंने बिगनिंग में बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। कंट्रोल सेंटर का एक और कमांड है, हमने आपको बताया था कि स्टेटस बार को टच करके जब हम 3 फिंगर ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो हमारा कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। लेकिन एक फिंगर अगर हम डार्क जो बार होती है जहाँ पर हमारे डार्क आइकॉन होते हैं होम की से जस्ट ऊपर, वहां पर एक फिंगर टच करके एक साउंड आता है। उसके बाद जब एक फिंगर को ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो भी हमारा कंट्रोल सेंटर खुल जाता है। मैं एक बार आपको ऑन करके बता देती हूँ। Settings. Dot. Skype. 10 new items. Skype. 10 new items. Airplane mode. Switch button. Off. Skype. 10 new items. Airplane mode. Switch button. Off. जी, तो आपने सुना होगा कि जब मैंने अपने डार्क वाली लाइन पे, जो डार्क आइकॉन वाली लाइन है, वहां पर होम के जस्ट ऊपर टच किया तो स्काइप बोलने के बाद एक रोलर जैसी आवाज हमें सुनाई दी धीरे से। वो आवाज आने के बाद जब हम उस फिंगर को ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो भी कंट्रोल सेंटर खुल जाता है। तो अभी जो मेन्यू आपने सुना उसमें आपने देखा कि हम कंट्रोल सेंटर में भी जो चाहते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक चीज एक्सेस करके ट्राई करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। आपने सुना कि वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट हम रख सकते हैं, लो पावर मोड रख सकते हैं, वॉलेट वहाँ पर रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। वहाँ पर 13-14 आइकॉन्स बने हुए हैं एप्स के, जो भी आपको लगता है वो आप अपने कंट्रोल सेंटर में ला सकते हैं ताकि आपको बार बार सेटिंग में या बार बार ऐप को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। चलिए एक चीज हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। Settings. Settings. Control. Voice memos. Insert voice memos. Text side. Insert text. Stopwatch. Insert stop. Screen recording. Insert notes. Insert note. Magnifier. Insert low power mode. Insert low power mode. Button. Insert low power mode. 6 of 13. Do not disturb while driving. Insert do not disturb while driving. Apple TV remote. Insert Apple TV remote. Alarm. Insert alarm. Button. 2 of 12. Accessibility. Insert accessibility shortcuts. Button. 1. Insert accessibility shortcut. More controls. Heading. चलिए अब हम कंट्रोल सेंटर ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमारे ये 2 कमांड आए हैं या नहीं। Settings. Skype. 10 new items. Mail. 98 unread emails. Mail. 98 unread emails. Airplane mode. Switch button. Off. Mobile data. Switch button. Wi-Fi. ACT. Bluetooth. Non-connected. Media controls. Rewind. Play. Fast forward. Lock rotation. Do not disturb. Switch button. Off. Brightness. 33%. Volume. Screen mirroring. Torch. Button. Timer. Button. Calculator. Camera. Button. Low power mode. Accessibility shortcuts. Button. Low power mode. Switch button. On. Accessibility shortcuts. Button. जी, तो आपने सुना कि वो दोनों ऑप्शन हमारे कंट्रोल सेंटर में आ गए। तो यहाँ से हम अपने कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ वहाँ से निकालना तो भी आप वो कर सकते हैं। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको नीचे की तरफ ले जाना होगा।
तो वो वहां से हट जाएगा। चलिए हम वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। Settings. Settings. Control center. Back button. Custom. Added organ. Include. Include. Heading. Torch. Reorder torch. Timer. Reorder timer. Calculator. Reorder calculator. Camera. Reorder camera. Low power mode. Reorder low power. Accessibility short. Reorder more controls. Heading. Reorder accessibility shortcuts. Button. Draggable. Actions available. Move below alarm. Reorder low power mode. Button. Low power mode. Reorder more controls. Heading. यहाँ से मैंने एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट को हटा दिया है। एक बार हम कंट्रोल सेंटर में जाके देखते हैं कि क्या वो गया या अभी भी वही है। Skype. 10 new items. Airplane mode. Switch button. Off. Mobile data. Switch. Wi-Fi. Base. Bluetooth. Media controls. Rewind. Play. Fast forward. Lock rotation. Do not disturb. Brightness. Volume. Screen mirroring. Torch. Timer. Calculator. Camera. Low power mode. Low power mode. Switch button. On. Low power mode. Switch button. On. जी ये वाला लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल सेंटर का, तो यानी कि एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट यहाँ से हट गया। तो आपने सीखा कि हम यहाँ से कैसे कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब आ गया होगा कि कैसे कंट्रोल सेंटर में हम एप्स जो अपने ज़रूरत की एप्स है उसको लें और कैसे हम उसको रिमूव करें। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर मिलते हैं, इसी सेटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन।
रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार एमके, आजकल तो 4G का जमाना है। तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G? ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ये फोन डुअल सिम है और दोनों सिमों में 3G है, तो हुआ ना 6G। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं टेक सिटी और मैं हूं मीनल सिंघवी इस वक्त आपके साथ। आज इस शो में हम बातें कर रहे हैं आईफोन सेटिंग की। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था आपको कि कैसे कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज किया जाता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली सेटिंग की तरफ देखते हैं कि अगली क्या सेटिंग हमें आईफोन में देखने को मिलती है। Control center, customize. Control center, back button. Settings, back button. Settings, settings, heading. Notifications, control center, button. Do not disturb, button. डू नॉट डिस्टर्ब का यहाँ पर ऑप्शन है, इसको भी हम चाहें तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। Selected, settings, do not disturb, heading. Do not disturb, off. When do not disturb is enabled, calls and alerts that arrive while locked will be silenced, and a moon icon will appear in the status bar. जब डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होगा तो हमारा फोन साइलेंट मोड पे चला जाएगा और हमें वहाँ पर स्क्रीन पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो भी मैसेज आ रहा है या फिर जो भी कॉल आ रहा है उसके बारे में। Settings, do not disturb, heading. Do not disturb, when do not disturb is schedule, off. स्केड्यूल यहाँ पर हम बना सकते हैं। अगर हमारा कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है ऑफिस जाने का और उस दौरान में मीटिंग के कोई टाइमिंग फिक्स हो गया है, तो उस दौरान में आप यहाँ पर स्केड्यूल बना के रख सकते हैं ताकि वो अपने आप ऑन या ऑफ हो जाए, आपको मैन्युअली ना करना पड़े। Settings, do not disturb, heading. Do not disturb, off. When do not disturb is enabled, calls and alerts that arrive while locked will be silenced, and a moon icon will appear in the status bar. Schedule, off. Silence, heading. Always. Selected, while iPhone is locked. Incoming calls and notifications will be silenced while iPhone is locked. Phone, heading. Allow calls from favorites, button. When in do not disturb, allow incoming calls from your favorites. Repeated calls, on. A second call from the same person within 3 minutes will not be silenced. Do not disturb while driving, heading. Activate, manually, button. Limit notifications while driving. Incoming calls will be allowed when iPhone is connected to car Bluetooth or hands-free accessory. Learn more, link. Auto reply to favorites, button. Auto reply. I'm driving with do not disturb while driving turned on. I'll see your message when I arrive at my destination. Button. Your favorites will receive this message when they text you, and may break through do not disturb by sending urgent as an additional message. Your favorites will receive this message when they text you, and may break through do not disturb by sending urgent as an additional message. जी, तो ये कुछ सेटिंग थी जिसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब के दौरान में। अगर डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आपका फ़ोन है तो उस वक्त आप क्या क्या सेटिंग इसमें चाहते हैं, जैसे कि मैंने किया कि जब फ़ोन लॉक हो तो साइलेंट रहे। ऑलवेज मैंने साइलेंट हटा रखा है, मतलब कि मैंने ऑलवेज को चेक नहीं किया, सिर्फ फ़ोन जब इसकी लॉक होता है तभी मैंने चेक किया है। तो इस अप टू यू, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप यहाँ से इसकी कोई भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए डू नॉट डिस्टर्ब के बाद क्या सेटिंग है हम वो देखते हैं। Settings, back, settings, do not disturb, settings, back button, settings, heading, control center, do not disturb, button, general, button, selected, settings, back button, general, heading, about, button, software update, button, airdrop, button, handoff, button, CarPlay, button, home button, button, accessibility, button, iPhone storage, button, background app refresh, button, restrictions, off, button, date and time, button, keyboard, button, language and region, button, dictionary, button, iTunes Wi-Fi sync,
button. VPN, not connected, button. Regulatory, button. Reset, button. Shutdown, button. Shutdown, button. जी, तो डू नॉट डिस्टर्ब के बाद जनरल वहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल में ही सॉफ्टवेयर अपडेट है, जनरल में ही हमारे फ़ोन के बारे में डिटेल है, कीबोर्ड रीजन सब कुछ रिस्टोर भी जनरल में ही आता है। जनरल एक बहुत यूजफुल सेटिंग है और बहुत कुछ सेटिंग इसमें हमें करने को मिलती है, सीखने को मिलती है। इनफैक्ट हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं और आपको पता लग जाएगा कि किस पर क्या सेटिंग है। जहाँ पे जरूरत लगेगी मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। Settings, back button. General, heading, about, button. Selected, general, back button. About, heading, name, admin's iPhone, button. Selected, text field, is editing, admin's iPhone, insertion point at end. Delete, E, N. Cap M, I, N, A, L, space, Minal. Done. Name, Minal, button. Network, industrial airtel. Songs, 24. Videos, 1003. Photos, 2257. Applications, 45. Capacity, 32 gigabytes. Available, 10.98 gigabytes. Version, 11.0. Carrier, Airtel 29. Model, MN900. Serial number, TNPT. Wi-Fi address, 5A. Bluetooth, 5A. IMEI, 3.5. ICCID, 8000. Modem firmware, 2.0. Seed, button. Legal, button. Certificate trust settings, button. Certificate trust settings, button. ये सारी अबाउट की सेटिंग थी जो आपने अभी सुनी और आपने सुना होगा कि मैंने यहाँ से अपने आईफोन का नाम भी चेंज किया है। General, about, heading, general, back button. Settings, back button. General, heading, about, button. Software update, button. Selected, general, back button. Software update. Checking for update. Your software is up to date. Your software is up to date. General, software update, heading. General, back button. Software update, button. Airdrop, button. Selected, general, back, airdrop, heading. Selected, receiving off. Contacts only. Everyone. AirDrop lets you share instantly with people nearby. You can be discoverable in AirDrop to receive from everyone or only people in your contacts. जब हम कोई चीज शेयर करते हैं तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि सबसे पहला ऑप्शन आता है ए ड्रॉप का। ए ड्रॉप एक शेयरिंग कमांड है। अगर कोई आईफोन यूजर आपके पास है तो आप इमीडिएटली उसे फोटो या कुछ भी चीज उसे भेजना चाहते हैं तो वो ए ड्रॉप के जरिए भेज सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। इसको आप चाहो तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वही हमें काम आती है। General, back button. Settings, back button. Home button, button. CarPlay, button. Handoff, button. AirDrop, button. Handoff, button. CarPlay, button. Home button, button. Accessibility, button. जी, इसके बाद जो यूजफुल सेटिंग है वो है एक्सेसिबिलिटी। इसमें बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए जो हम एक बार एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। Accessibility. Selected. General. Back button. Accessibility. Heading. Vision. Heading. Voiceover. On. Zoom. Off. Magnifier. Off. Display accommodations. Off. Speech. Button. Larger text. Bold text. Button shapes. Increase contrast. Reduce motion. On/off labels. Interaction. Switch control. Assistive touch. Touch accommodations. Home button. Siri. Button. Reachability. On. 3D touch. On. Keyboard. Button. Shape to undo. On. Vibration. On. Call audio routing. Hearing. Heading. MFI hearing aids. LED flash for alerts. Mono audio. Phone noise cancellation. Noise cancellation reduces 50% left. 50. Adjust the audio volume balance. Hearing aid compatibility. Hearing aid compatibility improves media. Heading. Subtitles and captioning. Audio descriptions. Learning. Heading. Guided access. Accessibility shortcut. Voiceover. Accessibility shortcut. एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट का मतलब होता है
जो हमारी होम की होती है उसको हम ट्रिपल क्लिक करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट होता है। इसमें मैंने वॉइस ओवर कर रखा है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो चाहे वो रख सकते हैं, बट क्योंकि ये शो विजुअली एम्पायर पर्सन्स के लिए है तो मेरा सजेशन होगा कि वो वॉइस ओवर ही रखें और एक ही चूज करें ताकि हमें दिक्कत ना हो। इसमें हम 1 से 2 चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम एक ही यूज करें। चलिए सबसे पहले हम वॉइस ओवर की सेटिंग में जाते हैं, क्योंकि सबसे टॉप पे वही है विजन और वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर की सेटिंग में हम एक बार जाकर देख लेते हैं। General, accessibility, heading, vision, heading, voiceover, on, button, voiceover, accessibility, back button, voiceover, heading, voiceover, on, voiceover speaks items on the screen. Tap once to select an item. Double tap to activate the, swipe 3 fingers to scroll, voiceover practice, button, speaking rate, heading, speaking rate, 65%, speech, button, verbosity, button. जी वर्बासिटी, मैं आपको बता दूं कि ये वर्बासिटी का जो ऑप्शन है ये iOS 11 के बाद ये वाला ऑप्शन आया है। तो चलिए जब iOS 11 की बात निकली ही है तो हम एक क्लिप के जरिए जानते हैं कि iOS 11 में क्या क्या ऐसा है जो नया लॉन्च किया है, नया चेंज किया है, वॉइस ओवर से रिलेटेड या फिर एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड। Welcome to what's new in iOS 11 in terms of accessibility features. One of the big things you will find is within the accessibility settings, we had in the past a verbosity settings within the voiceover section. However, Apple has redesigned it and added quite a few new options in the verbosity area. So let me show that to you. Verbosity. Selected. Voiceover. Back button. I'm going to go to the right. Verbosity. Speak hints. On. Okay. Now, before there weren't many things in this area. Punctuation. Some. Button. Punctuations. This is pretty cool. So now you can control how much verbose that you want within VoiceOver to tell you. So if you double tap on this. Selected. Verbosity. Back button. Punctuation. All. You now can have VoiceOver tell you everything of the punctuations. Selected. Some. Or some, which is by default. None. Or none. So if you hate all those punctuations being stated and read it out to you, now you have the option to turn it off or make it less or more verbose. Okay, so I'll go back. Verbosity. Back button. Punctuation. Some. Button. Okay, and so now it's set to some. Let's check out, see what else we have here. Speak detected text. On. Okay. Double tap determines whether automatically detected text in the focused item is spoken. So that's pretty self-explanatory. So once it lands on something, if you have it set on, it'll tell you what you just landed on. Capital letters. Speak cap. Button. Okay. This is new. Capital letters and the one below this. Deleting text. Change pitch. Button. Change text. So watch this. So I'm going to go back up one. Capital letters. Speak. Capital letters. I'm going to double tap on this. Selected. It's going to give you some options here. Capital letters. Heading. Selected. Speak cap. Now it's going to say speak cap. So it's going to say cap A, cap B, or place on. You can just have say a sound. Change pitch. Or change the pitch. So those are the items there. And I think do nothing. Do nothing. That's right. So those are the 4 items you can pick from. So let's go back to the Verbosity. back. Back button. Determines whether automatically detect capital letters. Deleting text. Change. So deleting text does the same thing. So you can either have it tells you it's deleting, or you can have a sound ding, or you can have a pitch, or no sound at all. So those are the 2 options that they give us as well. Embedded links. Speak. Button. Okay. So any time of embedded links, it will tell you, which is nice. Table output. Heading. Obviously, anytime you have tables that comes up and you want it to tell you a little bit more of the tables, let's show you what it says. Table headers. On. You got table headers. Row and column numbers. On. And row and columns headers, which is really cool. So now you have rows and columns that's being pronounced to you. So it'll say row 2, column 3 as you get into that particular cell. Now, either of these 2 items, table headers on. You can double tap off.
and turn those on, off. Row and column numbers. On. Okay. Determines whether this information is output when navigating tables. Mm-hmm. Emoji suffix. Off. Double tap to toggle setting. Has been in iOS 10, so that is not new. So we'll just go down some more. Speaks the word emoji when emoji are read in media descriptions. Off. Button. Media description. This is brand new. This is really cool. If you double tap in here. Selected. Verbosity. Back button. Okay. You can have different type of verbosity for media description. So let me go to the right. Media descriptions. Selected. Off. You have off. Speech. Speech only. Braille. Braille. Speech and Braille. And speech and Braille. I will tell you what this is used for. It's mostly for people, if you have closed caption coming up, it will read it to you by speech. Or if you have Braille, you just want the closed caption comes up in Braille. Or you can have speech and Braille come up. And when you are in the media itself and it's playing, and it's a video, you can also use the rotor, and the media description will show up in the rotor itself. And then you can flick up to speech Braille or speech and Braille. So that's a new item, and it's going to be great for our friends that are deaf. And that's going to be really awesome for those with a Braille display as well. Verbosity. So back. Okay, media descriptions. Off. Button. Media description. Table output. Heading. Embedded links. Speed. Table output. Table head. Row and column numbers. Determines whether this emoji suffix. Speaks the word. Media descriptions. Determines how closed captions. Closed captions plus SDH are output during media playback. And there you have it. So that's a new section in the verbosity within voiceover settings. Also in the voiceover settings, you will find something new within the speech area, which is the pitch. You can now change the pitch of the voice and use it across voiceover system-wide. So let me show you here. I'm going to go to the right here. Speech button. Find your speech within the voiceover settings inside of accessibility. Open that up. Selected. Voiceover. Back button. And we're going to go to the right. Speech. Head. Edit. Button. Voice. Ava. Enhanced. We always had these voices. Now to the right. Pronunciations. Button. We had those pronunciation before. Pitch. Heading. And there's our pitch. Now if I go one more to the right. Pitch. 50%. I can increase these pitch. Up or down so with I one can finger make to it adjust go. the value. This is going to be quite useful for people that might have some hearing issue and that can hear certain different frequency of a voice that helps. So I'm going to flick up to change this, go up higher. 60%, 70%, 80%, 90%. So you get the idea how the pitch sounds. So that is going to be a very nice feature for those that need a little bit of adjustment to hear things. So if I go back down. 80%, 70%, 60%, 50%. And that's there. Now if you go to the right one more time. Use pitch change. Off. If you want to use the pitch change, go ahead and set it on. So those are the new pitch setting. Okay, the next set of features is going to be for the low vision folks out there. You're going to like some of the things they put in iOS 11. And I'm going to go ahead and show that to you. First thing I'm going to bring up to you is the display accommodations. So I'm going to go here. Display accommodations. So there's the display accommodations. Go ahead and double tap that. Selected. Accessibility. Back button. All right. So I'm going to go right over to where the big thing is. Display accommodations. Invert colors. Off. Button. Invert colors. Yes, we had something like this in iOS 10, but they made an enhancement in this area. So I'm going to double tap here. Selected. Display accommodation. I'm going to show you there's the two options you got here. Invert colors. Heading. Smart invert. Off. You now have something called the Smart Invert. You may have heard about this, but I'm going to give Apple description what Smart Invert is. Smart invert colors reverses the colors of the display, except for images, media, and some apps that use our color styles. Okay. Now, for those that like the older invert color, you got the second option here. Classic invert. Off. There's the classic inverts. So if you're not a fan of the smart invert, you can go back to the classic invert. Now this is a little bit different. Classic invert colors reverses the colors of the display. Okay. So my understanding is that some of the colors that are very subtle, if you use a smart invert, an example, if it's a very subtle color change, it will try to make a little bit of a tint in there, so it'll be visually
more detailed to you so you can see it better. However, I'm not a low vision expert, and I can't tell you everything exactly it does and how it looks to me, but I will tell you, I'm going to point you to a great blog that Scott Davert has put out. It's going to go in a lot more details of the smart invert. It's going to go into more explanation and details, and also it's going to tell you some caveats in Catch-22. It's not a perfect thing. It's an improvement, yes, but it does have some issues, so be sure to read that blog. Now, before I head on out, I'm going to go back to the top left there. Display accommodations. Let's go back out. Invert colors. They put something in this area that just blows my mind. So I'm going to go down here. Enabling color filters. Color filters can be auto brightness on. They have placed the auto brightness into this accessibility area. Why in the world they do this, I have no idea. I in some ways it makes sense, but for anyway, Apple decided to move this. So if you're looking for the auto brightness, this is where you can find it. I will make a few more notes, and before we move on, anybody that's using the magnifier, you're going to see some improvements with the magnifier, which is going to be a pretty welcome thing for you. It is a much faster when it comes to focusing. So if you're looking at an object or something that has got a text on it that you want to read, you're going to notice that it's a lot faster and cleaner when it comes to when you're setting the magnifier on certain objects. Also, it's very adaptable to light and darkness now. My understanding, it changes very quickly now, so it's much faster. So this is always a welcome improvement. And then lastly is the speak selection. Any of those that use the speak selection, be sure to head on over there and check it out. There are some new improvements when it comes to words and sentences following. And check that out. Plus, it's also in the blog that Scott Davert wrote up. All right. दोस्तों ये एप्पल की तरफ से एक पॉडकास्ट था जिसमें इन्होंने बताया कि जो नया ओएस इन्होंने अपडेट किया है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत कुछ चेंजेस इन्होंने किए थे जो कि अभी हमने सुने, वॉइस ओवर की हेल्प से ये बता रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। पंक्चुएशन का इन्होंने एक ऑप्शन दिया है वर्बोसिटी में, और भी काफी कुछ चेंजेस इन्होंने किए थे जो हमें अभी अभी इस पॉडकास्ट में सुनने को मिले। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। इस शो को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी आईफोन की सेटिंग में बहुत कुछ सीखना बाकी है। आईट्यून्स के बारे में हमें सीखना है, अभी और भी सीरी के बारे में मेन हमें सीखना है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन अभी नहीं, अभी इस वक्त मुझे वक्त इजाजत नहीं देता क्योंकि इस वक्त हो गया है दूसरे शो का टाइम। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी कि मीना सिंघवी को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि। आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल। उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800123334। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। रेडियो उड़ान is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्नुल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Rock.